now we have this question. If A dot B is equal to A dot C and A cross B is equal to A cross C, and A is not a zero vector, then prove that vector B is equal to vector C. A dot B A dot C के इक्वल है, A क्रॉस B A क्रॉस C के इक्वल है, A नॉन ज़ीरो वेक्टर है. हमें प्रूव करना है कि वेक्टर B वेक्टर C के इक्वल है. क्या कर सकते हैं? We have dot and cross both. Geometrically समझते हैं. A dot B is equal to A dot C. What will be geometrical interpretation of this? We can have many different types of geometrical interpretations. One of the interpretations is, we take this term on LHS, we get A dot B minus A dot C is equal to 0. Okay, so from this we have A dot B minus C is equal to 0. I am using a distributive property of dot product. ठीक है ना? Okay, this means A dot B minus C is 0. A is non-zero vector. Okay, so what will be conclusion from this? अगर ये डॉट ज़ीरो है, A नॉन ज़ीरो है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़. आइदर वेक्टर B माइनस C इज इक्वल टू नल वेक्टर, और A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B माइनस C. दो पॉसिबिलिटीज़ है ना. ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, A नॉन ज़ीरो वेक्टर है. ओके, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है? यहाँ तो ये नल वेक्टर होगा, यहाँ तो A वेक्टर B माइनस C के परपेंडिकुलर होगा. इफ़ B माइनस C इज नॉन ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, उस टाइम पे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, देन वी कंसीडर दिस इक्वेशन. वी हैव A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर. ओके, we take vector A common. I am using distributive property of cross product. So we have A cross B minus C is equal to null vector. Okay, तो यहाँ से क्या क्या possibilities होगी? Which are possible outcomes? Possible outcomes are either vector B minus C is equal to null vector, or vector A is parallel to vector B minus C. ठीक है, we have this and this. इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा and है. ठीक है, दो इक्वेशंस है ना. B minus C is equal to null vector, or A is perpendicular to B minus C, and B minus C is null vector, or A is parallel to B minus C. Okay, now if we consider B minus C to be नॉन ज़ीरो वेक्टर, अगर हम B माइनस C को नॉन ज़ीरो वेक्टर कंसिडर करते हैं, then we will have A perpendicular to B minus C and A parallel to B minus C. Now certainly this is not possible. Simultaneously A can't be perpendicular and parallel to B minus C. एक साथ तो ये नहीं हो सकता. Okay, so we can't have B minus C not equal to 0. Definitely we will have B minus C is equal to 0, so vector B will be equal to vector C. ठीक है ना? So we have here 8 octants depending upon signs of x, y and z.